के बच्चों को गुड आफ्टरनून समस्त को आउ प्रणाम मध्य फ्रेंड्स देखो जो मैंने प्रिपरेशन कर आगामी एसएसबी टीजीटी एग्जाम तो से पेडागोजी किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे नहीं तो आम डिस्कसन करवा तो निहाती भाव में जदि आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करना ये रही आपंकर टेलीग्राम चैनल क्यूआर कोड बा आपण मैंने सीधा सड़क टेलीग्राम रे @ देकी आपण सर्च करेंगे OSSTET 2021 बा यहाँ को आपने सीधा सड़क स्कान कले भी आपने लिंक पाइबे सीधा सड़क जॉइन करेंगे टेलीग्राम रे जॉइन कले फायदा कौन हम ना डेली बेसिस रे मुझे क्वेश्चन पोल कराऊँगी जोटा कि आगामी एसएसबी टीजीटी आपण बहुत ही हेल्पफुल रहिबो ठीक अच्छी ता सहित मु कही रखुची जदि आपण मैंने एसएसबी टीजीटी पूरा सीरियसली प्रिपरेशन करूचंदी एवं चाहूचंदी आपण मैंने गुटे सीट नवापाई ताला निश्चित भाव में आम सहित आपण मैंने जॉइन करेंगे मात्र 300 टंकार 300 टंकार आपण मैंने पाइबे टॉपिक वाइज आपनकर जो रही ऑल टॉपिक रे थ्योरी आपण पाइबे लाइव पाई जाउचंदी प्लस आपण रेकॉर्डेड मध्य पाइबे ता सहित टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपण लाइव पाइबे विथ रेकॉर्डेड मध्य पाइबे स्टडी मटेरियल सबू आपनकर फोल्डर वाइज रही जोटा कि आपण मैंने A4 फॉर्मेट रे ताकू प्रिंट बाहर करके पढ़ी पारिबे आ मिक्स टाइप रे एमसीक्यू आपनकर नोटिफिकेशन आसिले आमे मिक्स टाइप रे एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा तो जो माने जॉइन करिया पई चाहूचंती निश्चित भाव में आम सहित आपण मैंने जॉइन करि परिबे जीवा स्टार्ट करबा आज प्रथम क्वेश्चन कौन रही आम देखि नबा फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानक सामने रे क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग किए कहबो करेक्ट आंसर कौन हम कौन हम करेक्ट आंसर किए कहबो बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर जदि आम देखा कौटा गुटे आपण को पचारि कौटा या भितर गोटे टीचर रिलेटेड फैक्टर जदि आम कहबा ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर जोटा कि मास्टरी ओवर दी सब्जेक्ट मैटर ऑप्शन नंबर ए तो आपंकर हेनी कहीं ऑप्शन नंबर ए यार हेनी तार कारण ऑप्शन नंबर एटा हूँ एनवायरमेंटल फैक्टर एटा सोशियो इकोनॉमिक तापरे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जदि कहबा एटा गुटे ये भी गुटे एनवायरमेंटल फैक्टर भितर आसीबो बा गुटे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर भितर आसीबो आ टेक्स्ट बुकटा हूँ रोचे क्या भितर ना रिसोर्स फैक्टर भितर आपंकर आसीबो बुझेला तेणु करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर जो मैंने ऑप्शन नंबर बी देइचंती से मानकर करेक्ट आंसर अच्छी से कथा आपंकर एथि कह नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कही एट लोअर क्लासेस द प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल किए कहबो प्ले वे मेथडटा कहा उपरे आपनकर पर्यवेसित प्ले वे मेथड कहा उपरे पर्यवेसित
बढ़िया आंसर। प्ले वे मेथडटा कहा पर पर्यवेसित ऑप्शन नंबर केते ऑप्शन नंबर जदि आम कहवा ऑप्शन नंबर बी जो मैंने देइचंती सेमानकर करेक्ट आंसर अच्छी एटा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एवं ग्रोथ। बुझेला कारण एठी आपन को प्ले कथा कहनी एठी कहिछि कोन प्ले वे मेथड कथा कहिछि खेल माध्यम रे शिखा जीवो तेणु प्ले वे aligns with the natural inclination of the children. It is supports the psychological stages of early development. It integrates learning with the child's natural growth process. तेणु ऑप्शन नंबर बी जो मन देइचंती सेमानकर करेक्ट आंसर अछि। ठीक अछि आगो को जिबा बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहछि व्हाई शुड ए टीचर यूज ए वैरायटी ऑफ असाइनमेंट्स एंड टेस्ट पैटर्न्स इन द क्लासरूम। जने टीचर काहे की व्यवहार करिवार आवश्यकता रही वैरायटी ऑफ असाइनमेंट कौन पाई माने व्यवहार करिवार आवश्यकता कौन रही तांको बिजी रखिबा पाई ना सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिबा पाई ना पिला मानक भीतर गुडे क्रिएटिविटी को एनहांस करिबा पाई ना टू सिंप्लीफाई द ग्रेडिंग प्रोसेस फॉर द टीचर। बहुत बढ़िया निश्चित भाव में आपण मैंने क्वेश्चन देखु देखु आंसर करि तेणु यार करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन नंबर सी हम जोटा कि पिला मानकर गोटे कौन करिथाय क्रिएटिविटी को एनहांस करिथाय ता सहित सेमानकु कौन दिए अपॉर्चुनिटी मध्य दिए कौन पाई ना डाइवर्जेंट थिंकिंग कारण आम जानी क्रिएटिविटी पाई डाइवर्जेंट थिंकिंग आवश्यकता रही तेणु ऑप्शन नंबर सी जो मन देइचंती सेमानकर करेक्ट आंसर अछि हैला। तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बढ़िया आंसर को आराम से कहबो कौन हम करेक्ट आंसर। When a teacher creates chart and graphs or gathers information to meet different learning needs, what type of instruction is being provided? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंस ना मेमोरी लेवल इंस्ट्रक्शन ना टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। बढ़िया एसएसबी टीजीटी आर थर आपंकर बहुत सिंपल क्वेश्चन आसला बुझे तेणु एटी आपंकर बेस्ड ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंस बुझेगा कि नहीं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपंकर किए देइथिले गार्डनर देइथिले तेणु जोटा को आम डिफरेन्शिएटेड इंस्ट्रक्शन बोली साधारणतः आम कही था तेणु विजुअल एड्स कैटर टू कौन स्पेशल और विजुअल इंटेलिजेंस आउ डिफरेन्शिएशन इंस्ट्रक्शन अडाप्ट्स द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड्स तेणु इट मूव्स अवे फ्रॉम वन साइज फिट ऑल अप्रोच जोटा कि आपणकर टीचर सेंटर्ड रे देखा जाए टीचर सेंटर्ड रे देखा जाए वन साइज फिट ऑल बुझा पड़ुची बुझीगला बहुत बढ़िया निश्चित भाव में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एबे को इन ए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट। जो माने जॉइन करिया चाहूच टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया चाहूच थ्योरी पूरा जो मानकर इकोनॉमिक्स होउनी थरुडी आसिकी इकोनॉमिक्स क्लास देखि परिबो तापरे कहइबो तो को करेक्ट आंसर कोन हबो। अच्छा हम राकेश भाई ना दी बोधे 100+ मार्क ये किसी कहीहबनी मैडम संतोषिनी मैडम किसी कहीहबनी एलटीआर परिस्थिति देखिए मार्क किसी कहीहबनी कई भी आशा कर एलटीआर एत कटअप जीव बोली तो ये कौन हम बहुत बढ़िया ओपन आउ इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट ऑप्शन नंबर बी जोटा कि ओपन आउ इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एम्फासाइजेस ऑटोनॉमी बुझिपारछ तेणु एन ओपन एनवायरनमेंट एनकरेज एक्सप्लोरेशन आउ कौन रे इनक्वारी जहाँफल
पिला कौन करि परिबो इनक्वायरी करि परिबो। According to Abraham Maslow, what is the term for the process of becoming true to oneself? Self esteem, social belonging, self actualization ना psychological security? करेक्ट आंसर कौन हम? 6 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम? सेल्फ एस्टीम तो आपंकर ये हेनी कहीं ना ये ट्रू टू वन सेल्फ देती तेणु सेल्फ एस्टीम टा आपंकर रेफर करे क्या कॉन्फिडेंस आ गोटे हूँ कौन रेस्पेक्ट कॉन्फिडेंस आउ रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। सोशल बिलोंगिंग ये रेफर करे क्या ना नीड फॉर द लव और रिलेशनशिप। आ गोटे हूँ रिलेशनशिप। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करेक्ट आंसर हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आ गोटे रहा कौन साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी ये आप रेफर करे कौन सेफ्टी आ गोटे स्टेबिलिटी नीड्स पकई दे पारे किछि नहीं एग्जामिनर किछि भी क्वेश्चन करि पारे तेणु मन रखिबार आवश्यकता रही। तेणु करेक्ट आंसर हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। बुझा पड़ा समस्त को समस्ते बुझीपार एक्सप्लेनेशन सहित जदि आम जा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये हूँ आपंकर हाइस्ट लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की बुझा पड़ुची। तेणु इट रिप्रेजेंट्स रियलाइजिंग वन्स फुल पोटेंशियल पिला कौन करि तेणु इट इन्वॉल्व्स फुलफिलिंग वन्स ट्रू नेचर बा कैपेबिलिटीज। यस क्लियर। तेणु जहाँ टे लिखुची ताकू निहाती भाव में तुम मैंने लिख। नेक्स्ट ए वेल एडजस्टेड और ताकू एक्चुअलाइज्ड पर्सनालिटी एक्सपीरियंसेस congruence between which two entities? सात नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम? टीचर आउ स्टूडेंट तो हेनी कारण टीचर स्टूडेंट हूँ एक्सटर्नल रिलेशनशिप ताले कौन हम द ऑर्गेनिज्म आउ ता निज सहित बुझीपार यहाँ हम स्कूल आउ पेरेंट्स जदि कहवा ये भी एक्सटर्नल रिलेशनशिप आ गोटे कॉग्निटिव आउ रिलीजियस ये माने रिलेशन या भितर आम जदि कहवा यहाँ अनरिलेटेड टू द कोर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस बुझेगा। तेणु ऑप्शन नंबर बी जो मैंने से करेक्ट आंसर अच्छे कारण कॉन्ग्रुएंसटा जो रहा এইটা আপনার ইমপ্লাই করুছে হারমোনি বিটুইন ইনর এক্সপেরিয়েন্স আউ সেলফ কনসেপ্ট বুঝিলা कि नहीं क्लियर। तेणु डिटेल्स कहली निश्चित भाव में जहाँ भी पढ़ुच ताकू डेली बेसिस रे टिके नोट कर बुझिला। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज द बेसिक लेवल ऑफ नीड in Maslow hierarchy? Basic need कोड have a correct answer? बढ़िया करेक्ट आंसर हूँ सिक्योरिटी। तेणु सिक्योरिटी नीड्स आर नियर द बॉटम ऑफ पिरामिड जोटा कि सेफ्टी नीड्स।
तेणु दे फॉलो द इमीडिएटली आफ्टर दी कौन फिजियोलॉजिकल नीड्स तेणु हायर ऑर्डर नीड्स लाइक मास्टरी कैन नॉट बी मीट विदाउट सेफ्टी सेफ्टी बा सिक्यूरिटी आम ये कहीपर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग कौटा मास्लो थ्योरी तुम बसंत दास मत मेसेज कर व्हाट्सएप मेसेज कर क्लास सरिया पर मेसेज कर मुझे देदेवी लिखिदेव तब तो कह करेक्ट आंसर कौन हम एटी जदि आम देखा पिला माने एटी कौन कर क्वेश्चन पचारुंट तेणु क्वेश्चन टा इंडिकेट करे सब बेले एक्टिव एंगेजमेंट आउ क्यूरियोसिटी है तेणु साइलेंस में इंडिकेटर फियर और पैसिविटी नॉट मोटिवेशन क्वेश्चन कही पर्सनल इंटरेस्ट एंड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स आर फैक्टर्स मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू 10 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम 10 नंबर क्वेश्चन पर्सनल इंटरेस्ट एवं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप रिलेटेड टू क्लोजली रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन तो हेनी कारण यहाँ आपणकर बॉडीली ट्रेनिंग सहित रिलेटेड तेणु मोटिवेशन हम यार करेक्ट आंसर मोटिवेशन आ सब्जेक्ट मास्टरी ओनली देछि सब्जेक्ट मास्टरी ओनली एटा बहुत स्पेसिफिक हो जाउछि बुझिपार कि नहीं आउ एठी कहिछि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ओनली बुझा पड़ुछि क्लियर बहुत बढ़िया आगु को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अचीवमेंट मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू achievement motivation can be defined as the tendency to कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अब persist in complete difficult task and reach the high standard achievement motivation involves the drive for excellence सबु बेले पिला भल करने चाहिए it includes overcoming obstacles to succeed and it is characterized by the persistence despite difficulties what is the primary purpose of assessment in the teaching learning process कहीं assessment कहीं करवा assessment करिवार मूल कारण कौन फास्ट ऑप्शन आपण मानकु कौन कहिछि टू पनिश ये तो हेनी टू चेंज द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड्स देखा पॉजिटिव अच्छी टू प्रमोट एवरीवन टू द नेक्स्ट क्लास ये तो बेसी स्पेसिफिक हो गला टू रैंक द स्टूडेंट्स फॉर द बेस्ट टू वर्स्ट ये भी हेनी ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर जो मैंने बी देइचंती सेमानकर करेक्ट आंसर अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन मोटिवेशन टेक्निक्स help in the realization of which educational objectives किए कहब motivation techniques help in the realization of which educational objectives only cognitive only psychomotor objectives cognitive affective और psychomotor ना only memory level objectives
निश्चित भाव में आम ये कहीपर ऑप्शन नंबर कौन हम ऑप्शन नंबर सी हम कॉग्निटिव अफेक्टिव आ गोटे हूँ साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स तेणु जो मोटिवेशन फ्यूल्स द डिजायर टू नो सहीटा है कॉग्निटिव इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड फीलिंग सहीटा है अफेक्टिव आ गोटे हूँ प्रैक्टिस ऑफ स्किल्स सहीटा हूँ साइकोमोटर बुझीगला एटा को अब्राहम मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच पर्सपेक्टिव कहा पर पर्यवेसित अब्राहम मास्लोंकर जो थ्योरी रही यार पीडीएफ मुझे अपलोड करदेवी पीडीएफ नहीं जीवो है सियोर पीडीएफ देवी प्रणाम प्रणाम अमृता करेक्ट आंसर होची ह्यूमनिस्टिक ऑप्शन नंबर बी ह्यूमनिस्टिक व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग इज प्राइमरीली टीचर सेंटर्ड एंड फोकस ऑन मेमोराइजेशन देखिबा यही क्वेश्चन टार आंसर किए कोई परिबो 15 नंबर क्वेश्चन आंसर मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल कहीं हेनी ना ये फोकस करिवो कहा परे ना जो रही लिखि दउछि लिखि दियो टिके टिके ग्रास्पिंग मीनिंग एंड रिलेशंस रिफ्लेक्टिव लेवल या आपनकर कहा सहित रिलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग इवाल्यूटिव लेवल जदि आमे कहबा ये आसीजिव जजमेंट गुटे आ गुटे रही एनालिसिस है तेणु ये मेमोरी लेवल हम मेमोरी लेवलटा हूँ लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इट रिलीज ऑन रूट लर्निंग एंड रिकॉल बुझीपाल ना तेणु क्वेश्चन केतबेले कौन पकड़ ताकू किसी कहीहबनी बुझा पड़ुची तो बहुत बढ़िया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन कोडा सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन ऑप्शन नंबर बी हम जोड़ा हूँ हेल्दी एंड लविंग रिलेशनशिप हेल्दी एंड लविंग रिलेशनशिप तेणु सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपुल हैव हाई इमोशनल इंटेलिजेंस एंड दे आर कैपेबल ऑफ डीप एम्पैथी एंड कनेक्शंस तेणु दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर ओ सेल्फ वर्थ नेक्स्ट हेलो क्लास रे क्लास रे क्लास सारे नेक्स्ट टीचर रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग पेडागोजी इंक्लूड टीचिंग स्टाइल्स मेथोडोलॉजी एंड ये क्वेश्चन आसूची अजय ये क्वेश्चन परीक्षा आसूची तुम देख पूर्व वर्ष एसएसबी देख एलटीआर देख तुम भावुच माने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी एग्जाम करिवो माने क्वेश्चन अलग हम अरे एग्जाम बॉडी दब किए एग्जाम बॉडी आपणकर फिक्स करिवो होउची डीएससी बुझिपारछ ना सी हला होउची एग्जाम कंडक्ट करेबो क्वेश्चन जे पेपर सेट करिवे तेणु बी हम यार करेक्ट आंसर पर्सनालिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द टीचर को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन is intended to treat all students as if they have the same learning needs, meet the diverse learning needs of the children,
with different intelligence, use only one method of teaching for everyone. Now focus only on the most talented students. Option number B. Option B of your correct answer. Option B. Next, which of the following can help promote the achievement motivation in a child? Telling stories of great men and women, setting realistic goals for the child, maintaining the high expectation of the excellence. Now all of the above. Correct answer कौन हबो? करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव हला. तेणु रूल मॉडल्स प्रोवाइड्स द इंस्पिरेशन, अचीव गोल बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस. आ गुटे होचे हाई एक्सपेक्टेशन सेट ए स्टैंडर्ड फॉर एफर्ट. इन द हायरार्की ऑफ नीड्स, if personal growth and self fulfillment are the goals, then the person is seeking. किए कहब? सीकिंग कौन हम? करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम, जोड़ा हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पूर्व कही रखुची, जदि आपण मैंने एसएसबी सीरियसली प्रिपेरेसन करूछंती टीजीटी आर्ट्स पई, आम सहित मात्र 300 टंकार आपण मैंने जॉइन करेंगे. गोटे मिनिमम प्राइस 300 टंकार जॉइन करेंगे. सबुथिरे आपण मैंने लाइव प्लस रेकॉर्डेड पाइबे. थ्योरी टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपन को कहीं भी रिकमेंड करेंगे. बुझिपारछ कि नहीं? आउ स्टडी मटेरियल सब आपण मैंने A4 फॉर्मेट रे पाइबे. तो नोटिफिकेशन को अपेक्षा न करिकी आपण मैंने एबे ही जॉइन करेंगे. जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, एटा को 21 नंबर क्वेश्चन. The relation between result of techniques of measurement and other indicator of the characteristics that are measured is known as. 21 number question. दीटा भी रिलेशनशिप कहूँ. The results between the result of techniques of measurement and the other indicator of the characteristics that are measured. तो ताकू आम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहवा. कहीं कहवा मुझे आपण मानक कहूँ, टिके खाली वेट करूँ. कंटेंट वैलिडिटी आम क्या कहवा? कंटेंट वैलिडिटी ना ये रेफर करे कौन? हाउ वेल द टेस्ट कवर द सब्जेक्ट मैटर. अच्छा, फेस वैलिडिटी. फेस वैलिडिटी कौन मेजर करे? सब पढ़ाई बैच रे सब पढ़ाई ना. रेफर्स टू whether the test looks like it measure what it should. बुझिपारछ कि नहीं? आ गुटे कौन? प्रेडिक्टिव वैलिडिटी. ये रेफर करे कौन ना हाउ वेल द टेस्ट प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस. बुझेला? तेणु ये तीन कथा कहली. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रे देखो, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रे मेजर करिवो कौन ना हाउ वेल ए टेस्ट मैचेस द थियोरिटिकल कंस्ट्रक्ट. तेणु इट कंपेयर्स टेस्ट स्कोर विथ अदर नोन इंडिकेटर्स. आउ एनश्योर करिवो कौन ना द टेस्ट मेजर्स द स्पेसिफिक ट्रेट जेपर कि डिप्रेशन इट क्लेम्स टू. बुझेला? तो चारि प्रकार कथा मु आपण मानक एटी कहली वैलिडिटी बाबद रे, एवं एटा मु पुंखानुपुंख भाव में पढ़ाई. आपण माने जाइकी चेक करि परिबे. Which of the following are the characteristics of good evaluation? Validity, reliability, practicability and fairness, usefulness, all of the above. एटी करेक्ट आंसर जो देखा ये सब गुड़ाक रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी कौन
एनश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ व्हाट इज मेजर्ड, फेयरनेस ऑफ प्रैक्टिकेबिलिटी, एनश्योर करिवो इवैल्यूएशन इज एथिकल आउ फिजिबल। Which of the following is not a part of the teacher centered method? Team teaching, problem solving, demonstration, lecture method। टीचर सेंटर्ड रे कोउटा गुटे पार्ट नुहे बोली से पचारि। टीचर सेंटर्ड रे कोउटा गुटे पार्ट नुहे। देखिबा किए कहबो करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टा होची स्टूडेंट सेंटर्ड हला। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट इज एडमिनिस्टर बिफोर स्टार्टिंग ए लेसन और इंस्ट्रक्शन? एटा बोधे एई थर ओएसएसटेट रो पकैतला, एई थर ओएसएसटेट रो पकैतला, एई थर पकैतला, एई थर कौन बेटा? करेक्ट आंसर प्री टेस्ट, प्री टेस्ट हम बातार आउ गुटे ना भी कौन रोची? प्री टेस्ट को आमे आउ गुटे कौन कहबा? बी कहउचंदी बहुत सारा पिला फॉर्मेटिव बोली कहउचंदी। प्री टेस्ट जोटा प्री टेस्ट सहीटा को आमे कहितांती प्लेसमेंट। डी डीटा डायग्नोस्टिक टेस्ट। एटी बस से कहिछि बिफोर स्टार्टिंग ए लेसन और इंस्ट्रक्शन, यार प्रॉपर आंसर होछि आपनकर प्री टेस्ट हबो। तेनु प्री टेस्ट एस्टैब्लिश द बाय ए बेस लाइन ऑफ नॉलेज, इट हेल्प्स टीचर प्लान इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द करेंट एबिलिटीज हला। टीचर सेंटर्ड लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड एज व्हिच टाइप ऑफ अप्रोच? आपण प्लेसमेंट सर्च करूथुले, प्लेसमेंट देखला बेलको आपण पाइले नाही। हो डी हबो। डीटा एटी पर्टिकुलरली ता पूर्वरु कहिछि ना। करेक्ट आंसर होची कन्वेंशनल अप्रोच, ऑप्शन सी। कौन कही से व्हाट टाइप ऑफ अप्रोच? कन्वेंशनल, राइट। जोड़ा आपनकर ट्रेडिशनल अप्रोच आमे कहि परिबा हला। ट्रेडिशनल तेणु दे आर हिस्टोरिकली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, which learning theory or approach emphasizes that all the individuals are unique and values individual experience and initiative? को करेक्ट आंसर कौन हम? बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म। ऑप्शन नंबर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, वेरी गुड। तेणु ह्यूमनिज्म सेंटर्स ऑन द होल पर्सन, वेरी गुड आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर ए रिकॉग्नाइजेशन टाइप ऑब्जेक्टिव टेस्ट? ये भी गोटे क्वेश्चन ओएसएसटेट रे आसला, सेटा बोलते गोटे नोट वाला क्वेश्चन पचार नोट या भीतर कौटा नुहे मन पड़ुची? अरे ता मेथड टा को कह जाए, ता अप्रोच टा को कह जाए, पैसिव अप्रोच गोटे नाही कोउडी, बुझला कि नहीं?
बसंत दास तुम्हें ता सिनोनोमीटा को कहीदे पार बा तुम्हें तार मेथडटा तुम्हें कह ये टीचर होती पेसिव ता माने पेसिव अप्रोच नुहे है ये करेक्ट आंसर ये सब गुड़ाक आप है बुझे आ रिकॉल टेस्टा हूँ आपंकर आसब फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गाग्ने हाउ मेनी इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स आर देयर फॉर लर्निंग किए कहब बढ़िया करेक्ट आंसर हूँ 9टा थिला 9टा तेणु गाग्नेस 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ए स्टैंडर्ड मॉडल इट इंक्लूड्स स्टेप्स लाइक गेनिंग अटेंशन एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक इट गाइड्स द डिजाइनिंग द इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस इवैल्यूएशन हेल्प्स इन जजिंग द वर्थ ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल सिचुएशन टीचर सैलरी स्कूल बिल्डिंग ना प्लेग्राउंड साइज करेक्ट आंसर हूँ एजुकेशनल सिचुएशन ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी अप्लाइड टू डील विथ स्टटरिंग प्रॉब्लम इन स्टूडेंट्स डिक्टेशन करवा प्री रिकॉर्डेड स्पीच ना प्रोलॉन्ग्ड स्पीच ना फास्ट स्पीच कौटा हम यार करेक्ट आंसर जो मैंने जॉइन करने चाहूच 8917270933 यही नंबर रे मते व्हाट्सएप करि परिबो किए कहब स्टटरिंग प्रॉब्लम करेक्ट आंसर हूँ प्रोलॉन्ग्ड स्पीच देख प्रोलॉन्ग्ड स्पीच इज फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक तेणु इट इन्वॉल्व्स स्ट्रेचिंग out the sound to reduce the speech rate then it helps the speaker manage airflow and reduce the stuttering event if a teacher allows a gifted students like Salman to create a prototype for a new science book based on different themes which technique is being used एट कौ टेक्निक यूज करागला जितेबाला गिफ्टेड पिला माने थांती सेतेबाला आमे को प्रोग्राम सहित जानती एनरिचमेंट प्रोग्राम तेणु एनरिचमेंट प्रोवाइड्स डीपर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज तेणु इट कीप्स द स्टूडेंट्स विथ पीर बट आड्स कॉम्प्लेक्सिटी तेणु इट अलाउ द गिफ्टेड स्टूडेंट्स टू अप्लाई द नॉलेज क्रिएटिविटी व्हिच थ्योरी emphasizes the importance of the home setting and environment in understanding a child's behavior to build the effective pedagogy एग्जाम टाइम रे मुंड काम करूनी करिवो ना एटा बहुची इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी एटा देइथिले के ब्रोन फॉर्न ब्रोनफेन ब्रेनर्स theory looks at environmental system it consider the microsystem as crucial बुझी पारछो तेणु एटी बिहेवियर इज सीन एज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन विथ
these environments. In the context of group learning, what is the primary benefit for students? सबु बेले जेतेबेले भी मु MCQ आणे किछि नुआ नुआ शिखिबा पई निहाती मिलिबो. कौन बेटी सोशलाइजेशन ऑफ इंटरेक्शन कारण ये ग्रुप लर्निंग कथा कही. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मेजरमेंट इन एजुकेशनल एंड बिहेवियरल साइंस? It has an absolute 0 point. It has no absolute 0 point. It is always objective. It is only quantitative. कौन हम करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इट इज नो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट. तेणु एजुकेशनल ट्रेड्स जपर कि इंटेलिजेंस आम कहीपर आर रिलेटिव. तेणु ए स्कोर ऑफ 0 ऑन टेस्ट डज नॉट मीन 0 नॉलेज है. तेणु फिजिकल मेजरमेंट लाइक हाइट हैव द एब्सोल्यूट 0. एजुकेशनल मेजरमेंट इज often considered to be purely objective, subjective and complex in nature, fixed across all instruments, simple and direct. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर है. ठीक अच्छे. हाउ मेनी प्राइमरी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट आर देयर? केतरा रहउची? चारिटा. कौन कौन? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो. Which scale of measurement is used primarily for the classification of individuals into categories like language and nationality? किए कहब यही क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर कौन हम? यहाँ प्राय सब कहीदेव. वेरी गुड. तेणु यहाँ नॉमिनल हम. ऑर्डिनल जदि आम कहबा ऑर्डर पाई बा रैंकिंग पाई व्यवहार करिबा. इंटरवल इंटरवल कोठी यूज हुए ना स्कोरिंग विथ इक्वल इंटरवल पाई. इक्वल इंटरवल पाई आम जदि स्कोर करिबा पाई चाहिबा इंटरवल स्केल. आ रेशियो फिजिकल मेजर फिजिकल मेजरमेंट करिबा या सहित रहिबो कोन एब्सोल्यूट 0 एबे कहि के आसलिबा. बुझी पारछ ना नहीं? फिजिकल मेजरमेंट रे एब्सोल्यूट 0 रहिबो. एबे टिके पूर्वरु कहि के आसिल तुम मानकु हला. तेणु करेक्ट आंसर होची नॉमिनल. नॉमिनल रे नेम बा लेवल्स गुडा आपन कर रही थाए हला. एटा को ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर. उत्तर ऑलरेडी ब्रैकेट रे दिया है. रैंकिंग और ऑर्डरिंग जोड़ा कहली फर्स्ट सेकंड थर्ड. व्हिच स्केल possesses the attribute of equal interval but lacks an absolute 0 point? करेक्ट आंसर होची इंटरवल पॉइंट हला. इंटरवल तेणु 0 इज आर्बिट्रारी जपर कि 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट
इज नॉट नो हिट एवं मोस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड आईक्यू स्कोर यूज दिस स्केल आईक्यू पाई आमे साधारणतः इंटरवल स्केल यूज करि थांती एटा मन रखियो सेठी क्वेश्चन मु पचारि गस्तिली आईक्यू पाई आपनकर व्यवहार करा जाए इंटरवल स्केल व्हिच स्केल ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड फॉर फिजिकल मेजरमेंट्स एंड possesses an absolute 0 point सब तो मुझे गोटे क्वेश्चन ले एक्सप्लेन कर देली कहि दबो सब आंसर कहि दबो मु तो गोटे क्वेश्चन ले एक्सप्लेन कर दे आसिली सेठी करेक्ट आंसर होची रेशियो स्केल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रेशियो स्केल हला यार पीडीएफ नब कि केते जण यार पीडीएफ नवा पई चाहूचो जो मैंने पीडीएफ नवा चाहूचो टेलीग्राम चैनल ले जॉइन कर जाओ जो मैंने चाहूचो पीडीएफ नवा द टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन कैन इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिटन ओनली verbal only both written and verbal neither written nor verbal yes yes pdf दे दे व्यस्त होनी को करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ रिटन हम वर्बाल भी रहिबो कारण इवैल्यूएशन टा होची कॉम्प्रिहेंसिव रिटन टेस्ट मेजर द नॉलेज एंड आर्टिकुलेशन आ वर्बल टेस्ट मेजर करिवो कम्युनिकेशन एंड क्विक थिंकिंग व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द मास्टरी लेवल ऑफ अचीवमेंट इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट देखिबा एई क्वेश्चन लो करेक्ट आंसर को 42 नंबर क्वेश्चन नॉर्म रे तो होची कंपैरिजन करा जीवो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जदि कहबा स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स को मेजर करिवो एप्टीट्यूड ये फ्यूचर पोटेंशियल को प्रेडिक्ट करिवो बुझेला व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए स्टूडेंट कंपेयर टू अदर एबे कहि के आसिले आ यार उत्तर तुम माने संगे संग कहबो कोन बेटा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हम हु स्टेटेड दैट इवैल्यूएशन इज फॉर लाइफ थ्रू लाइफ देखुछ एटा किए कहिथिले सॉरी इवैल्यूएशन कहिथिले एजुकेशन सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी कौन हम करेक्ट आंसर एटा महात्मा गांधी कही नई तालीम एजुकेशन हॉलिस्टिक एजुकेशन आम कहीपर ए टेस्ट यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स सच एज बीडी एंट्रेंस एग्जाम इज फोकस्ड ऑन एटा कहीदेव एटा कहीकि आसी तुमको ये पूर्व क्वेश्चन तुमको कहीकि आसती पूर्व क्वेश्चन मुझे कहीकि आसती करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर बी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एटा को इवैल्यूएशन इज बेस्ट डिफाइंड एज बड़ ऑप्शन अच्छी देखिए कहब मुझे बेसी जाऊनी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन प्लस वैल्यू जजमेंट ए चेकलिस्ट इज ए टूल दैट रिलेट्स टू ऑप्शन नंबर बी specific behaviors or the presence or absence of traits. Intelligence test are typically associated with which measurement scale? एटा कोई गेसी कौन बेटा इंटरवल
Which of the following is an example of data that would be categorized under a nominal scale? एटा हूँ टाइप ऑफ लैंग्वेज स्पोकन जोटा कि हिंदी इंग्लिश मराठी लैंग्वेज आर कैटेगरी ऑफ विदाउट रैंक दे सर्व एज द लेवल फॉर आइडेंटिफिकेशन है। थैंक यू। ये थिला आपण मानक पई किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जदि आपण माने पीडीएफ नवा पई चाहुचंती ए क्यूआर कोड को आपण माने निश्चित भाव रे कौन करेंगे स्कान करके आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हे लिंक रे भी डिस्क्रिप्शन लिंक भी मुझे आपण डेस्क्रिप्शन ले दे देइछि एवं संध्यार क्लास हम 7:30 क्लास हम आज गोटे टॉपिक वाइज जानबे एमसीक्यू है पॉलिटी हो बा आपनकर जोग्राफी रो लैंडफॉर्म देखुचे लैंडफॉर्म रो क्वेश्चन आनी पारे बुझिला। तेणु निहाती भाव में जदि आपण माने जॉइन करिया पई चाहुचंती आम सहित तो निहाती भाव में आपण माने जॉइन करंतु मात्र 300 टंका देखंतु आमर विद्यासार केते सुंदर पढ़ाउचंती आसिक थोड़े थियोरी देख बुझेला। तो निश्चित भाव में जो मैंने जॉइन करने चाहूच सब पाइज थियोरी टॉपिक वाइज एमसीक्यू 300 टकर कहीं पचारे तुमको तुम कॉल तो कहीं उठेबनी आउ बुझिपारछ ना तुम पेमेंट कर सारिबा परे तुम पेमेंट कर सारिबा परे तुम कॉल आउ कहीं रिसीव करिवेनी तुम पाइले पाओ न पाइले नहीं किंतु जते बेले भी कॉल करिवो मु तुम कॉल रिसीव करबा पई राजी अछि बुझिला। तेणु निहाती भाव में जदि जॉइन करने चाहूच ये नंबर रे पेमेंट करिकी सेम नंबर रे स्क्रीनशॉट शेयर करि परिबो बुझिला। रहिली पुणी देखा आउ गोटे क्लास रे निश्चित भाव में आपण माने आम टेलीग्राम रे जॉइन करंतु टेलीग्राम रे केते सुंदर क्वेश्चन मु आपण मानक पई पोल करौची आपण माने थरुटी आसिकी क्वेश्चन